Namaste, I am Prasad Bang from Yogesh Marketing. I present this show Design Dialogues every week, but more often than not, I forget to actually, acknowledge the team who actually facilitates this podcast. So this podcast with us today is by Krishna and Jaydeep. They are the people who are at the back of the screen, but they're more important than any of the people who are here. With us today, we have a very dynamic architect. You might have seen her rather up till now, and if not, you'll definitely see her in the coming months and years. She is very dynamic. She works in different cities with different projects, and she has some amazing social media stuff. With us today, we have architect Shubhangi Vahan. Shubhangi, ma'am, welcome to this podcast. Thank you so much for having me. How are you doing? I am good. How are you? I'm doing good too. To start with, given your age, what is your experience as of now? It fascinates me जिस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करते हो एंड जिस तरीके से आप काम कर रहे हो इट डज नॉट गो विद यू Yeah. But there are a lot of Gen Z kids already doing much better than I am doing. I but think not so. not better I believe would be Yeah. similar but not better. Yeah. What is that one thing which drives you while you start the project? I think creating something different, Mhm. yeah, creating something wherein people will come and live and make experiences. Yeah, When you put any of your efforts in an architectural side which you have, there is more of you being emotional about yes, relating yeah, to the place. yes, तो क्या ये बोलना ठीक है शुभांगी मैम कि घर ऐसा बनाओ कि आप भी उसमें रह सको? yes, Is it definitely, correct? yes, Well, you should be emotionally connected. ऐसा नहीं है yeah, कि आप yeah. बस काम कर रहे हो जो डेफिनेशन होती है ना कि यार दिल से वो मत करो बट यू Hmm. मेंटेन प्रोफेशनलिज्म. What do you think? I think घर हम लोग बना रहे हैं for somebody who is going to spend their entire life in that. And a lot of people after them. Yes. So and it is going to stay for like 50, 100 years. Wow. Right. So you want the people who are going to stay there to experience something out of that place. True. So if they make a memory of that place, तो वही area में वो कुछ ना कुछ memory they'll create. So I think design should be dependent on people and designed for them. Wow. So you've got this thought with you Yeah. when you decided. Then you had your first project. So was it in college or after college? So I have done some projects while my college was going on, and after in college also I used to work some freelancing stuff and everything. I used to do. I worked with couple of builders also while I was working in college. उनके लिए I've done renders and designs हम लोगों ने किया था. So I had a idea कि market में कैसे काम करना है. And then after coming to Nagpur, I've spent 1 year just building maybe. After building. coming to Nagpur, as in you're not from Nagpur. No, I've stayed in Mumbai for last 5 years. Oh wow. Yes, and then practiced for another 1 year in Mumbai, and then I came back to Nagpur. 740 and very slow. Yeah. So you've been to the city of India, at least for Yeah, architecture my and favorite construction. city. Yeah, me too. And then you've come down to Nagpur. Yeah. You know, before I come to this question, generally while students actually take up sides, in the graduation and graduating process. So do you think it is correct, or do you think that they should wait, or is there a middle ground also? I think if you have somebody to guide you, then you can take it. It is not wrong. It is not wrong, but you need to have somebody to guide you. नहीं तो हम लोगों ने ऐसा designs देखा है wherein you enter into a washroom and kitchen is just opposite to that. Exactly. We have seen It these does not designs, make right? sense. So if you don't have that space planning या ऐसा कोई guide करने वाले नहीं है, then these problems might occur, and then the end product जो use करेगा उसको problem होगा. We are just designers. हम design करके चला जाएंगे. But the people who are going to stay there for years and years, they are going to face all of these issues. So you have to be very mindful while Cautious designing. So, Yeah. one should not be very excited just for the sake of it. Yes. Be cautious, be mindful, or wait. Yes. Does not mean Or कि maybe सब कर रहे हैं go तो करो. find somebody who can guide you. Market में बहुत सारे लोग हैं. If you can randomly text somebody कि how to do this, they would genuinely reply you back. Have you got these? I have done this. Not the beginning. Yes. On LinkedIn. Yeah. Guys, she is very well with her social media. She works beautifully well. And एक segment में से इसी का रखना चाह रहा हूँ of how you can actually seek help. More often than not, we think यार हमको कौन मदद करेगा, जैसे तो लोग मदद करेंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, बट करके देखो,
और सही प्लेटफॉर्म पे करके देखो, एंड वो कैसे करना है इज समथिंग व्हिच मैम विल टेल अस, मैम प्लीज। You just have to go find somebody जो भी आपको नीश में काम करना है. जैसे I have connected with the architect Samir Z. He has like 15,000 followers on LinkedIn. 15,000, Yes, and does amazing work. He's from Chennai. तो उनका मैंने पेज देखा. I saw his work. Amazing work. Amazing, very thoughtful architect. Next guest, hopefully. Yeah. So I then started talking to him कि how do you do this, how do I do that, I saw your work, how should I go Take ahead with it. inspiration from it. Yes. Then he replied back, and people do reply back. They do entertain you if you go with a question, or if you go with at least कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Obviously. Everyone likes praising him. Yeah, He's not wrong at all. Yes. He did get replies from these people. I have gotten reply from a lot of people. You would agree to it. संजय पुरी सर का एक डिजाइन है नागपुर में. I've sketched that and LinkedIn पे मैंने उसको पोस्ट किया. He has liked that post. संजय पुरी sir has liked it. You know, this is the thing people, we often think यार क्या होगा. अगर मैं भी इनके जगह होता या कोई भी होता, कृष्णा होता, जयदीप होता, तो यही सोचते कि यार क्या फोटो पोस्ट करेंगे, कहाँ ही कोई लाइक करेगा. Things happen when you take action. And this is a very good example of that. You know, we always seek mentors, but we always are scared also of texting them or trying to talk to them. But what if they're also wanting to have mentees? Yes. You know, we should break that ice. Yes. And when you're very young, so nobody is judging you. कि ये, why will they judge you? They know that you don't know things. Because you're very young. They are, let's say they are 35, you're 25. They know that you don't know such certain things in architecture. They would happily help you with those things. Even I connected to her on social media. Yeah. I used to see her posts and the way she's actually, sculpting everything. It's really impressive. Now, what is the social media game in architecture? Tell me. I mean, so for you, it is very important because जो दिखेगा वही दिखेगा is very literal when it comes to this profession. Yes. And for the longest of the years, I remember लोग डालते ही नहीं थे. नजर लग जाएगी, कॉपी हो जाएगा, लोग देख लेंगे. बट अब शायद सबको लग रहा है कि नहीं भाई, अब नहीं डालेंगे तो उल्टा हमारी नजर लग जाएगी. It is necessity of the hour अभी, क्योंकि सब लोग जहाँ से ढूंढ रहे हैं. Where is everybody scrolling all the time? ये शायद आप हमें देख भी सोशल मीडिया पे रहे हो. Exactly. तो पूरा टाइम मेरा फोन का स्क्रीन टाइम is 11 hours. I am sure yours might be a lot. I've got competition. So everybody is at least using their phones for 6 hours. And what are they using? WhatsApp, Facebook, Instagram. So you have to be somewhere there for you to present, be visible, right? अब हम लोगों ने, मैंने I've worked for only 3 years now, right? There are people who have worked for 30 years. Very true. But they are not visible. आप चैट जीपीटी का शुभांग बेस्ट आर्किटेक्ट इन नागपुर लिखते हो तो हमारा नाम आता है ऑन टॉप. So that we have done through social media. Yes. आप गूगल पे भी करोगे तो टॉप 5 में हमारा नाम आता है. But there are a lot of architects who are doing amazing work and large scale of projects, but they are not on social media. इसीलिए वो लोग visibility उनका थोड़ा less है. Now where does a client go and find architect? On Google, maybe on Instagram, somewhere. For a fact, शुभांगी मैम, अगर मैं किसी और से भी पूछूं, वो नाम देगा तो पहले मैं सर्च करूंगा. Yes. अगर वर्ड ऑफ माउथ से भी हो रहा है, तो सोशल मीडिया हियर इज द की पार्ट ऑफ द प्रोसेस. आपको या तो उधर से मिलेगा या फिर कहीं और से मिलेगा, पर आप उधर ढूंढोगे, तो वो तो रहेगा ही. पहला सेगमेंट रहेगा, दूसरा सेगमेंट रहेगा ही रहेगा. Yeah, let's say somebody told me कि योगेश मार्केटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं और काफी अच्छा मटेरियल सप्लाई करते हैं नागपुर में. इज अ वेरी बिग प्लेयर. लेट्स से, तो मैं क्या करूंगी? आई वुड गो टू इंस्टाग्राम एंड सी कि हु इज योगेश मार्केटिंग, राइट? Everybody does this. Yeah, everybody does this. And then if you have all your projects posted, it gets very easy for the client also to understand. अब हम लोगों को let's say I get a lead, तो मुझे उसको मैनुअली बताना पड़ता है कि हमने ये प्रोजेक्ट किया है, ये किया है, ये किया है, दिस प्रोजेक्ट, and then send all of that, right? So instead I send my Instagram कि इसमें हम लोगों ने सब कुछ पोस्ट किया है, प्लस आवर पोर्टफोलियो, कि ये हमारा पोर्टफोलियो ऑफ वर्क है, वी हैव डन दिस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो इंस्टाग्राम देख के दे अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द पर्सन यू आर. मेबी. वेरी ट्रू. एंड आल्सो कितने लोग साला हर फोटो देखेंगे जाके. Yes. ये कितना उल्टा they will be very at ease if they're scrolling through the profile. Yes. And understanding the work. Yes.
Then when we talk about, you know, the Gen Z segment in this industry, a huge number of students joining in Mm-hmm. and, you know, trying to make their space. Do you think the industry is growing at pace with the students, or is there a lag? It is growing, I think, and Gen Z, in terms of Gen Z, if I think, वो लोगों को आप ऐसे बांध के काम नहीं कर नहीं करवा सकते. तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन कि मैं 2 साल के लिए अभी काम कर रहा हूँ, उसके बाद आई डू माई ओन, Obviously. है ना. मोस्ट ऑफ द पीपल Is आर, this correct though? If I may interrupt. see, it depends on if you think you are capable enough to give that sense of satisfaction to the client, then it is correct. मुझे आई हैड एक्सपीरियंस एंड आई थॉट कि वी विल क्रैक इट, तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि वील स्टार्ट. You stepped into the murky Yes. waters. नाउ इफ यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ डिजाइन और आपको लग रहा है कि यू आर लैगिंग समवेयर, जैसे हमारे रेंडर क्वालिटी इज वेरी गुड, आई Okay. कैन जस्ट से इट आउट No, लाउड. obviously, but it's good. Yeah, It is good. it is very good. और फिर आपका डिजाइन सेंस भी इतना अच्छा अगर नहीं है, तो यू शुड देन गो एंड फर्स्ट ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ दिस एंड देन मे बी डू इट अगेन. I So understand. I have some mentors. जैसे I have some architects. One I told you about a Bangalore friend. He's a good very good architect. He is, I think, top 30 architects. Wow. Yeah. Mhm. तो मैं जो भी, let's say मैं कुछ डिजाइन बनाती हूँ and if I have any doubt, I would share it with him कि give me critics on this, या what do you think about this, would you live in this, and then he would give you critics and stuff. तो हम लोग प्लान बना के डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं दे रहे हैं. We are doing some brainstorming on पूरा our पूरा ब्रेकी करके कर रहे हो yes, ताकि yes, we are doing some brainstorming on our end and then giving it to client. So if you think you are established with these people and सब कोई आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी. प्लान दे दिया, खत्म हो गया काम. इट्स नॉट लाइक दैट ना. मैम ये डिटेल नहीं है, मैम क्लाइंट साइड पे ये हो गया, साइड पे वो हो गया, क्लाइंट चिल्ला रहा है, यू हैव टू डील विथ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ यू थिंक यू आर केपेबल एंड टू डू डील विथ ऑल ऑफ दिस, देन मे बी गो अहेड एंड डू इट. such a beautiful answer. You know, if you think you're capable, if you think you can manage, it's, you know, it's all right to go and make mistakes, Yes. but not at the cost of the other person. Yes. You know, not at the cost of your reputation, which is yet to be made or established. Yes. Beautiful, Shubhangi. When we talk about a site, it is just not a 4 alphabet word. It is Yeah. very much more than Yeah. that, and not a 4 alphabet Yeah. word. And sometimes also side. Not even site, it is side. You know, initially I used to get so confused. वो side पे भेजो, वो side पे भेजो. So when we talk about this particular realm of a site, you have your contractors, laborers, carpenters, vendors, गाड़ी वाले, everyone. Then you have the client. Yes. The only bridge is Shubhangi. Yeah. Communication, purchasing, rates, Yes. quality, execution, returns, leftovers, everything. Yes. Explain this to us as to how does a site function or a side function. One word I would say, stressful. Because imagine you are not even out of your bed and you start getting calls कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. It's very very stressful. Plus if you have multiple sides, so it is difficult. oh my god. हाँ, तो difficult है, but it's fun also. क्योंकि the end like I say, I keep saying this again and again कि end में when a client enters into that space and वो उसको celebrate करते हैं and they are happy. आप जब ओपनिंग कर रहे हो उसका, you are invited and everybody would say कि इन्होंने वो डिजाइन किया है. So it is very very warm, yeah, very very हाँ. So I work for that. Mainly I work for this feeling. So as you said that, you know, you've cracked the code or you are trying to crack the code. So if any of our architects are watching this video, designers are watching this video, how are those steps which you take to manage a particular site? Is there a setup? Is there a template? कि ये delegation करके ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, or you know, things come to you in a more refined manner. ना कि छिले क्यों नहीं पहुंचे, screw क्यों नहीं पहुंचा. You know, but in a manner कि ये चीज हुई कि नहीं, आप उनको पूछ रहे हो. हाँ. Can you explain? So first when the client comes to us, we have a meeting
बेसिक एक बेसिक ब्रीफिंग होता है. No, no. हाँ, एक बेसिक ब्रीफिंग होता है. आई कॉल्ड देम टू माय ऑफिस. वी हैव अ ब्रीफिंग सेशन जिसमें आई टेल देम कि मैं क्या सर्विस आपको देती हूँ और मैं व्हाट आई एम केपेबल ऑफ गिविंग यू. कि आपको ये भी चाहिए तो वो सब हम लोग नहीं देते, हम ये देते हैं या हम ये सब भी देते हैं, राइट. एंड देन वी हैव अ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस व्हेन वी डू डॉक्यूमेंट साइनिंग और ये सब. क्योंकि हम लोगों ने फ्यूचर मतलब पहले ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि पैसे नहीं आए या ये नहीं हुआ. देन यू कीप आस्किंग फॉर मनी कि सर पैसा भेज दो, पैसा भेज दो. आई डोंट लाइक डूइंग ऑल ऑफ दैट. सो यू हैव अ वेरी डिटेल्ड और वेरी ब्रीफली रिटन कि इस टाइम पे आपको इतना पैसा देना है, इस टाइम पे हम आपको ये डिलीवर करेंगे एंड दिस होल प्रोसेस. एंड फिर वी हैव अ CRM शीट जैसा एक शीट है हमारे पास वेरिन वो हम लोग साइट क्लाइंट को भी प्रोवाइड करते हैं. वी ऑल्सो कीप इट कि किस दिन कितना पेमेंट्स आया है हमारे पास एंड किस दिन हमारे एंड से क्लाइंट वेंडर्स को पेमेंट गया है, राइट. सो लेट्स से वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट वर्थ 50 lakhs. तो 50 लाख का 51 भी नहीं होना चाहिए, 49 भी नहीं होना चाहिए, राइट. सो फॉर यू टू ट्रैक दैट वी हैव अनदर ट्रैकिंग शीट, expense tracking sheet wherein we track all the expenses we are doing while we are doing a project. Because it would go for like 8 months, yeah, 9 months on an average. तो यू वॉन्ट रिमेम्बर कि जनवरी में मैंने एक पेमेंट किया था 50,000 का किसी योगेश मार्केटिंग को, है ना. तो you won't remember this after 8 months. And even if you do, you cannot rely Yes. on only memory. Yes. It's not something material. Yes. And then जैसे let's say we have finished 4 months and out of 50 lakhs we have अभी हमारा 30 lakhs खत्म हो गया है. So we also get a sense of understanding कि अच्छा हमारे पैसे ज्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं. So this expense sheet so this expense sheet helps us very much. और फिर उसके बाद एक क्लोजिंग होता है, एक क्लोजिंग डॉक्यूमेंट हम लोग की इस डेट पे हम आपका क्लोजिंग होगा एंड दिस टाइम पे वील हैव टू सेटल दी अकाउंट. हाँ, यस. एंड अब कितना इस हिसाब से चलता है? पूरा तो नहीं 7ish. Wow, more than majority. Yes. With contractors also we have a proper document signing with the contractors we are working with. उनके साथ भी we have a document signing. प्लस वेंडर्स जो है उनकी भी पेमेंट्स एंड बिलिंग और ये बहुत ही क्लियर तरीके से हम लोग करते हैं. सो देयर इज नो कंफ्यूजन इन आवर एंड आल्सो एंड देयर एंड आल्सो. देयर इज अनदर थिंग गोइंग ऑन एज कमीशन ऑफ आर्किटेक्ट. तो वी डोंट, हम लोग फीस ही ज्यादा चार्ज करते हैं डायरेक्टली अप फ्रंट. So very clear about it. Yes. That we would charge you extra. We would charge you this amount. आपको सही है तो we are good to go. इससे हम लोग कम भी नहीं चार्ज करते, इससे ज्यादा भी नहीं चार्ज करते और वेंडर के थ्रू घुमा करके भी पेमेंट नहीं करते. तो वेरी क्लैरिटी, मतलब इट्स बेटर यू कीप क्लैरिटी बिटवीन द क्लाइंट. वरना मनी इज इन्वॉल्वड. ये वरना ऐसे हो सकता है कि लेट्स से आई एम टेकिंग कमीशन फ्रॉम यू एंड देन दैट क्लाइंट गॉट टू नो somehow what impression it puts of me in front of that person, right? So we want to grow. Oh, that's nice. That's bold. These are good input, if you think about it, people, like, they have the systems in place. One thing which we generally lack is systems, a procedure to work, a method to work. And if you have this cracked in these 3 years of your working, it is a good signal that you're bound to achieve something better than the rest. Because you worked on the basics. हमको लगता है साइट मिल जाए फिर सिस्टम पे काम करेंगे शायद. No, so it is, हाँ, सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब मैं प्रेजेंट नहीं हूँ अगर लेट्स से आई एम आउट ऑफ नागपुर फॉर 1 month स्ट्रेट तो मेरा काम चलेगा. तो पहले सिस्टम फिर साइट is what you want to do. Yeah. Perfect. So when we talk about remuneration, when we talk about fees, this field has often not been just to architecture design. Yeah. It has never compensated them in the manner in which they should. Yes. They are doing a 5-year degree. Yes. A lawyer is doing a 5-year degree. Yes. A doctor is doing a 5-year Yes. degree. An accountant Yes. is putting in that much of years. But they are on a different pedestal. They can command Yes. certain things. Yes. इलाज नहीं करूँगा, हाँ. केस नहीं लड़ूंगा, accounts बिगाड़ूंगा. But why is it not with architecture designers? Still, after years and years of this setup existing, you can see buildings all around. But you still have an government act. There's only 5 pages. That of 1964. Yes. I think particularly in architecture, this is the case because there's no second person involved in other
जो बाकी सारे, हम्म, लेट्स से अ डॉक्टर, तो अ नर्स कैन गिव यू अ मेडिसिन, Very बट true. नर्स के अलावा नोबडी कैन डू दैट जॉब, Very true. राइट? And आप ट्रस्ट भी नहीं करोगे, आप आप खुद ट्रस्ट भी नहीं, घबराओगे. खुद भी ट्रस्ट नहीं करोगे, राइट? नाउ लेट्स से अकाउंटेंट, Hmm. अकाउंटेंट के अलावा देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ अकाउंटेंट हु कैन डू दैट जॉब, Very true. या अ लॉयर, तो लॉयर ही एक आपका केस लड़ सकता लड़ है, देयर इज सकता नो है. सब्स्टिट्यूट टू Very दैट. true. इन केस ऑफ आर्किटेक्ट, इफ यू हैव दैट स्किल, एवरीबडी कैन डू दैट. ऐसे लोग, या लोगों को लगता है, ऐसा लोगों को लगता है. परसेप्शन है. हाँ, एंड क्लाइंट्स को भी लगता है कि यू डोंट नीड अ आर्किटेक्ट टू डिजाइन अ होम, हमारे ठेकेदार भैया भी कर देते हैं, राइट? अभी तो हम लोग वही, अभी तक प्रैक्टिस वही करते हुआ है ना. अब जाके थ्रू सोशल मीडिया पीपल आर वेरी अवेयर दैट आर्किटेक्ट इज अ थिंग, इंटीरियर डिजाइनर इज अ थिंग, एंड यू हैव टू पे देम फॉर यू टू गेट अ सर्विस फ्रॉम देम, राइट? अभी वो मार्केट में आया है, अभी नागपुर इज वेरी न्यू टू दिस थिंग, बट अभी हम लोग स्लोली वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस. Now architect is there, interior designer is there, civil engineer is there, there are Contractor is there, the most Contractor difficult is- segment yeah, of the hierarchy and the most horrible segment of the hierarchy to deal yeah, with. this job as well. So, Shivangi ma'am, when we talk about contractors as a, Hmm. topic, we see कि अरे हम कर देंगे, Hmm. हमने शिवांगी मैम के अंडर काम किया है, Hmm. तो हमको पता है वो कैसे काम करते हैं, तो हम तो कर ही देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है. How much of this is true? अब सी, लोगों को चाहिए 3D दिखा दो, तो एक सिविल इंजीनियर कैन मेक इट, अ स्टूडेंट कैन मेक इट, Freelancing, I believe ChatGPT also can make it now. या ChatGPT कैन आल्सो मेक इट. आप उसको Exactly. फ्लोर प्लान दे दो, उनको बोल दो गूगल जेमिनाई, अमेजिंग सॉफ्टवेयर, गूगल जेमिनाई को बोल दो कि इसका मुझे एक फ्रंट व्यू दे दो, साइड व्यू दे दो, ये व्यू दे दो, ही वुड गिव यू एवरीथिंग. बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप? चैट जीपीटी ने दिया है कि आप यहाँ दिस लेवल तक आप कांच लगाओ. हाउ मच इज दिस लेवल? Exactly, measurement. एंड देन यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ डिजाइन कि इतने में इतना ही कांच अच्छा दिखेगा, इतना अच्छा नहीं दिखेगा, राइट? या इतना किसी चीज का थिकनेस अगर चाहिए तो इतना ही चाहिए, इतना नहीं चाहिए. True. इतना रहेगा तो बहुत बल्कि दिखेगा. बल्कि दिखेगा. तो दिस अ डिजाइनर कैन टेल यू. ठेकेदार भैया कैन डू देयर ऑन साइट ground work. We learn a lot of things from them as Obviously, well. because they're getting their hands dirty. Yes, yes. Practical चीजों पे Yes, involved हैं. yes, yes. So उनसे भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, बट वी हैव डन अ डिग्री इन दैट. Obviously. So डिजाइन सेंस और ये सब, इट्स वेरी Subjective डिटेल्ड and और सब्जेक्टिव. specific to Yeah. a particular Yeah. thing. So obviously, their contractors, उनका practical knowledge is more efficient. Yes. But मतलब it does not mean कि वो किसी और की जगह ले सकते हैं. I believe इस पूरे सेटअप में सबकी जगह स्पेसिफाइड है. Yes. And लोग उस बाउंड्री में रहे, Hmm. so it is better for the project. Yes. What do you think? Yes, 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 it is. We do exchange thoughts with the contractor bhaiya also, because there are some things I am thinking this way, or then contractor bhaiya would say कि मैम ऐसा भी तो शायद हो सकता है, या ऐसा better हो सकता What है. if you get a good idea? Yeah, there are things which we discuss, but then you as a designer you put it through, right? And then you present it to the client, and it goes this way, not this way. I understand. Which is better. Yes. Now, so when you actually choose contractors or work with contractors, one thing which we can see is that now not everyone wants to become a carpenter or a contractor. So modular furniture is coming in huge flow. Yes. We have Virat Kohli doing live space ka marketing. We have Jindal coming into Yes. JSW Homes. Home Lane, I believe Reliance ka hai. Yeah. So we already have big players, Yes. the players, the industrialists who are involved into this. With Birla coming into ply and everything else. And what do you think is the future of the industry? I mean, are we pivoting towards modular furniture now and leaving behind the old hassle carpentry setup? No, I think there are certain things that machine can do, and there are certain things जो एक कारीगर ही Wow. कर सकता है, right? Karigar. Only he can do. There are some things जिसको आपको हाथ से रिफाइन करने की जरूरत है. Okay. But I think these modular furnitures and everything is coming because nobody has time these days. Everybody is hustling, everybody is going to office. दिन भर उन लोगों के पास टाइम नहीं है. To monitor and look Yes. on the site. Yeah, Okay. so it's better you directly contact with these contractors और फिर उनसे directly बनवा लो, and वो delivery भी बहुत fast देते हैं. If you get a work done by carpenter, it would take you कम से कम 3 महीना of time to complete the interior,
they would do it in 45 days. I है ना, understand. modular furniture is very fast. So people would think कि फटाफट पेस्टिंग उधर ही हो जाएगा, यहाँ कचरा भी नहीं होगा, तोड़फोड़ भी नहीं होगा, इट्स वेरी इजी. So that is why people have these two minds. I think. But what about the quality? मतलब ये सब लोग बोलते हैं कि आपको बाहर से बहुत अच्छा दिखता है और अंदर से उतना अच्छा ना हो. As a professional, what do you think? What is your opinion? That is true also, no? It is. It is true. No one knows अंदर क्या लगा है. No one knows अंदर क्या है. अब पता भी नहीं चल सकता. How would you हाँ, actually? हम लोगों ने एक बार उनको काट के दिखाने के लिए बोला था. And क्योंकि सी इफ यू यूज वेरी थिक, वो आपको पता ही है, प्लाई आप अगर ऐसे वो knock नॉक करेंगे करोगे तो hollow नहीं रहेगा. हाँ, तो आपको काफी अच्छा बल्कि Sound वॉइस आएगा, आता है. हाँ. और आप अगर उसको ब्लॉक बोर्ड में करोगे तो ऐसा ब्लॉक टाइप का आवाज आता है, राइट? तो हम लोगों ने ऐसा उनको बोला कि आई डोंट थिंक कि दिस इज अप टू द फिनिश, Which we जितना wanted. हमने पैसा दिया है उसके लेवल का वो नहीं है. तो फिर उनको काटने बोला, एंड वो था भी भूसा बोर्ड जो हम लोग बोलते Particle हैं, board. हाँ वो था. वापस फिर उनको करवा दिया. सी इफ यू आर पेइंग 3 lakhs फॉर अ किचन एंड देन यू गेट अ पार्टिकल बोर्ड वाला किचन, देन How did it work? Then we talk about metro cities like Bombay, Delhi, and all. And then we talk about Nagpur. That mind says it all. What is the difference of professionalism? What is the difference of magnanimity of the project? What is the difference of timeline, fee structure? If you could throw some light, because now designers more and more want to work in different cities. yes. They want to taste Yes. every city and its Yeah. culture and not be restricted to a place. So, if because you've already done it, can you please shed some light? See, in metro cities, people are more formal, more professional while speaking to you. Everybody is. The client, the contractor, All the stakeholders. everybody, the carpenter भैया, everybody, right? नागपुर में हाँ जी मैडम जी कैसे है, है ना? इसमें 2 घंटे निकल गए. And then in terms of fees, it's very different. So we have a very specific guideline by COA कि आप you have to charge this month percentage of the project cost. But नागपुर में इतना पैसा I don't think कि I think बड़े architects को शायद दे भी रहे होंगे. But if you are a very young architect, तो people are not giving you that much money. मतलब एक्सपीरियंस से वो ज्यादा होता है. Yes. ना कि इससे. Ideally, if you are a licensed architect, then it should be मिनिमम अमाउंट. एवरी सब लोगों के लिए एक सिमिलर अमाउंट होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट सीओए आल्सो सजेस्टेड कि आपका बेस मार्च दिया उन्होंने कि 7% होना चाहिए ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट. ये डिफरेंस है. इन मेट्रो सिटीज पीपल डू अंडरस्टैंड दिस एंड दे वुड पे यू 7 लाख They रुपीस would. अपस्टेड. यस. And upstate as in scheduled manner, हाँ, as without scheduled. you going after them, Yes. reminding them again Yes, and again. yes. यहाँ भी हम लोग ज्यादा रिमाइंड नहीं करते. वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक, हम लोग पहले मीटिंग में ही बता देते. वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक पेमेंट टर्म्स. वी डोंट वांट टू कॉल यू एंड आस्क यू फॉर मनी because we Does are not look professional. I don't like doing that. So we have a very specific way कि इस टाइप में आपको इस दिन में आपको इतना इतना पेमेंट करना है. But yeah, so there is a lot of differentiation Yes. when it comes to functionality in different Yes, cities. yes. In terms of timing also, वहाँ बहुत फास्ट काम होता है. नागपुर में थोड़ा सा आराम थोड़ा से सा? काम होता है. पूरा सा. So where would you prefer to work as a professional? See, there are two aspects of it. Obviously. मुंबई में अगर मैं काम करती तो it won't be very easy for me to get into top 5 in Google. To know it all. है ना? Now नागपुर में भी Google में हमारा top 5 में नाम आ रहा है. तो it's easier for you to make your space in a 2-tier city. Very true. And in those cities there are big players already settled in and working very efficiently. So in that ways, I would prefer Nagpur. But in terms of money, in terms of clients, Professionalism. in terms of professionalism, in terms of scale of projects, Mumbai is. So do you think Nagpur will rise to Mumbai? Yes. Or with Definitely. the culture and people remain No. same? I think 5 years from now, Nagpur will be amazing. Is it? Yeah, I So think very so. hopeful. Yes. And that is why you're investing your time and Yeah, effort. yeah. I think a lot of big players are also coming in na to Nagpur. बड़े कामधेनु का अभी बन रहा है बड़ा टावर. Kamdhenu and even Abhinandan Lodha, Kalpataru. Yeah, Kalpataru is also. But why do you think are they coming? I mean, do they really see future in this city? Yes. See, Nagpur is a center of India. Logistically. Everything is very close. यहाँ से आप मुंबई पहुंच सकते हो in 6, 7, 8 hours, I think. Yeah.
यहाँ से नासिक क्लोज बाय है, यहाँ से आप हैदराबाद जा सकते हो इन 5 years, true. हाँ, 5 hours. 5.5 hours. तो एवरीथिंग इज वेरी क्लोज एंड सिटी इज लाइक दिस, आपके पास बहुत जगह है. अब ना मुंबई जैसा सिटीज दे आर वेरी क्लटर्ड और ऑलरेडी वो हो चुके हैं. पुणे इज ऑल्सो वेरी सैचुरेटेड नाउ आई थिंक. I understand. नागपुर में अभी है काफी स्कोप और पीपल आर ऑल्सो कमिंग. They are wanting to migrate. या to the गवर्नमेंट city. ऑल्सो हैज सम प्लान्स कि ये करेंगे वो करेंगे. सो बस आई थिंक ओनली प्रॉब्लम विद नागपुर इज देयर इज नो वर्क स्पेस. कंपनीज नहीं है, बड़ी कंपनीज नहीं है. Commercially अगर आपको काम करना हाँ, हो, सब बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई करके भी बाहर ही जा रहे हैं, बाहर ही रह रहे हैं. बाहर ही रह रहे हैं. True. So we need these professionals to come back to the city and stay in the city. So the they city contribute grow. economically. Yes. Wow, good thought. Then, if I were to ask you as to what is the nature of the projects you prefer to work in, are they residential, are they commercial? In commercial, are they big scale or small scale? How would you define your choice of project if you were to tell this to the people? So currently we are majorly doing resorts, residences and villas. ठीक है. Office, few small scale offices. We want to scale it to commercial spaces. By the years हम लोग जैसे grow करेंगे, we want to scale it to commercial big scale projects. Now we have some projects, जैसे एक नासिक में हम लोगों का चल रहा है, that is a 15,000 square foot bungalow. तो अभी फिलहाल हम लोग बंगलोज और ये सब कर रहे हैं. दैट इज कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल. हाँ, ऐसा मिक्स टाइप में है. एंड देन वी आर डूइंग अ एयरबीएनबी इन चिकलदरा. या एंड अलीबाग में भी वी आर डूइंग अ विला. एक वृंदावन में वी आर डूइंग अ रिजॉर्ट जैसा सेटअप. नहीं, वृंदावन सिटी टुवर्ड्स द सिटी ओनली. बनारस. हाँ, तो आगरा. तो ये तो अभी फिलहाल तो हम लोग रिजॉर्ट्स, विलास, वी आर वर्किंग. तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. यस, वी वांट टू डू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. एक्चुअली वी वांट टू डू अलग-अलग increase the array of work. Yes, and understand ki what all things we can provide. Wow, that is nice. Very optimistic. Then, so if I were to ask you about the academics part of architecture, is it changing with time? Remember, for law it is still the same. Same books, same acts, same years. But ours is not a very practical field as compared to you all. You still have to go by the books. And you people have to go by the looks. Yes. And not the books. So is it still evolving with time? Yes, it is. Our college, I was from DY Patil. So वहाँ पे अभी उन्होंने 3D printing and बहुत सारे ऐसे activities लेके आए हैं, wherein by using all of these activities you can explore design thinking and critical thinking and ये सब चीज़ें आप explore कर सकते हो. अब अभी recently एक हमारे कॉलेज में हुआ था parametric brick wall. Okay. So parametric design, how you can make parametric design in brick wall, right? Again, innovative. Yes. So these things, college are also coming up with these ideas कि how you can develop या design thinking कैसे आप briefly वो कर सकते हो. तो ये सब कॉलेज में में एक्सरसाइज कितनी करवा सकते हो. yes. तो हमारा कोर्स भी इट इज डिजाइन दैट वे कि सिर्फ बुक नहीं है. मोर डिजाइनिंग, मोर ये सब. इट्स वेरी स्ट्रेसफुल बट इट इज कि क्रिटिकली आपको कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है. जो आपके प्रोफेसर होते हैं वो लोग भी बहुत क्रिटिकली आपको बताते हैं कि क्या किया है, रीडो. हाँ. तो मतलब एक बहुत ग्रोइंग प्रोसेस से आप निकलते हो to actually attain the degree. It's very hard, but I think it is important. It is important to be hard. Yeah, I think nice. so. While we are on the end of this podcast, Shumangi ma'am, where do you see yourself and your firm in the near future? And what are your expectations from the people who are listening to us? The only expectation I have from people is to please hire a designer. And if you hire any designer, just firmly agree to whatever he is saying. Or she is saying. क्योंकि वो अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो she has a thought behind what she is saying. आप नहीं agree करते हो तो you can sit down. That is a different thing. Yes. But if she is telling you something, then maybe try and understand कि वो क्यों बता रहे हैं. They are not telling कि आपका नुकसान हो जाए या हमको ज्यादा पैसे मिल जाए. हमको तो जो पैसे मिलने हैं वो तो मिलने ही है, राइट? हमने तो आपको पहले ही कोट कर दिया. So if somebody is giving you a suggestion, so please listen to that. Yeah, maybe
ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हाँ, उसमें बहुत बैक एंड फ्रो, ऐसा क्यों करें, ऐसा कैसे करेंगे, एक वैसे रिदम क्यों ब्रेक हो करें, जाती है। हाँ, एंड देन यू राइट. तो see, it is very new process for them as well, Very true. and it is new process for For us us, as every well to client has its own coordinate. experiences. Yes. So I think for them I have only one required कि आप हायर करिए एक डिजाइनर को, और वो जो बोल रहे हैं उनका डिजाइन इंस्टेंट को बिलीव करिए. Trust करिए, हाँ. believe करिए. Wow, wow. And where do you see yourself in 5 years? I think receiving a lot of awards. 100%, 100%. Awards, accolades, you get that. You're on a very positive route for that. Yeah, we're also working on a startup. एक छोटा हम लोग एक टेक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं. So if you know कि आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स को बहुत टाइम लगता है टू फाइंड मटेरियल या सोर्स मटेरियल. लेट्स से आई पुट एक शैंडलियर इन माय डिजाइन, अब वो शैंडलियर मैं कहाँ ढूंढूं इन रियल लाइफ, क्योंकि दिस इज इन 3D मॉडल, Very राइट? true. So we are trying to create a platform wherein you can find these materials easily and source it available ऐसा करके. Throughout India and all. Yeah, अभी हम लोग figure out कर रहे हैं how to do But that. job is half done. Yeah. You started figuring out. Yeah. That's nice. Wow. So we want कि ये वाला जो platform है ये भी काफी grow करे and architecture to grow. 100%. And I'm sure the most of the people who are listening to us will also understand the fact that she's not just an architect designer. She's multifaceted. She is also working on a tech platform. एक अंदर की बात आपको बताऊं तो she has also done a startup already. Which failed badly. But it is important she's done it. You know, so you're interacting here with a very interesting person. I am putting out her socials in the description. You can go and see her portfolio. जैसे वो कहते हैं कि पूरा सोशल मीडिया पे है. Go see her LinkedIn. Assuming आप YouTube पे भी हो. नहीं है अभी, but आने we'll do वाले it. हैं. हाँ. YouTube पे भी आने वाले हैं. So yeah, this is Shubhangi Vahane. She is an architect designer. She is working in multiple cities across the country. You can reach out to her for her suggestions, for her guidance. And मुझे तो आप जानते हो वापस कैसे बोलूँ. So yeah, thank you so much for joining in. Thank you so much for your valuable time. Thank you, Shubhangi ma'am, for Thank giving you. your time to us. And this is it, people.